मानव सिन्हा, वक्त हो चला है द टाइम्स ड्राइव शो का, विच इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, packed into one episode every week right here. And this time as well, we have a lot of action lineup for you guys. So जल्दी से नजर डालते हैं कि क्या आ रहा है आपकी ओर over the next half an hour. शुरुआत करेंगे Volkswagen की Tayron से, which is their premium family SUV. फिर लेकर चलेंगे आपको TVS Ntorq 150 के टेस्ट राइड पर, जहां हम जानेंगे whether it brings the Ntorq magic to the 150cc segment. And we bring you a special conversation with Skoda India to find out what went behind in deciding the new Kushaq that has come to the Indian market. तो जैसा कि आपने देखा, काफी कुछ आ रहा है आपकी ओर, और हाँ, हमारे साथ है द टाटा Altroz. Now, Tata Motors as a brand has an identity in the Indian market, and that identity says that their cars are safe. When it comes to Volkswagen, well, their identity says that their cars are fun to drive. But what happens when you try to take that Volkswagen formula, that Volkswagen magic touch to a family SUV? Well, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मैं तो बहुत जानना चाहता हूं. चलते हैं ध्रुव पालीवाल के पास, जो लेकर आए हैं आपके लिए नई Volkswagen Tayron. 7 seats, a premium feel, an engaging driving experience, a tech-loaded cabin, and safety that does not compromise. Are you looking for all of these things in one car? Well, the Volkswagen Tayron R-Line just might be the answer to all your questions. अब शुरुआत करते हैं Volkswagen Tayron के लुक्स के साथ. अब Volkswagen and उनकी SUVs in particular have always had this understated but sharp look. With the Tayron, the looks they remain understated, but जो sharpness है वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी कमी आई है. The design looks a little bit more softer now, looks a little bit more elegant now. I would say I think it's matured quite well. Also, let's take a quick look at these headlights over here. You've got a twin projector setup. You've got a DRL that's running the width of the car till the other side. From the side, the Tayron R-Line again looks like those understated Volkswagen SUVs. There's not a lot of stuff happening here. The silhouette kind of remains similar to what the older car felt like. But once again, I will say this over here. Looks जो हैं थोड़े और softer हो गए हैं. गाड़ी थोड़ी और elegant लगती है. साथ ही में एक quick look डालना चाहूँगा इस alloy wheel design पे. It's a new design for Volkswagen. It's a 19-inch wheel and I think it really gels well with the design of the car. Overall, यहाँ पे एक complete कोहेसिव डिजाइन देखने को मिलता है. अब हम टायरॉन के पीछे की तरफ आ चुके हैं. पर्सनली ये मेरा फेवरेट एंगल है इस एसयूवी का. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये टायरॉन की बैजिंग बीच में मिलती है, एक इल्यूमिनेटेड Volkswagen का लोगो मिलता है. साथ ही साथ ये हनीकॉम्ब पैटर्न वाला जो एरिया है ये सिमिलर दिखता है आगे की ग्रिल जैसा, तो फेमिलियरिटी है वहां पे. बट आई थिंक द बेस्ट थिंग हियर are the lights. First of all, you get that connected LED bar जो आजकल बहुत फेमस है इंडियन कार्स में. साथ ही साथ ये यूनिक सा लाइट पैटर्न आपको देखने को मिलता है, which we have not really seen on any other Volkswagen car in India. I'm in the first row of the Volkswagen Tayron SUV and सबसे पहली चीज यहाँ पे ये cabin almost completely blacked out है. अब इसकी वजह से जो है एक सेंस ऑफ स्पेस का इशू थोड़ा बहुत जरूर क्रिएट होता है. स्पेस की कमी नहीं है, it's just that the ambient sense of space is not there because black is pretty much absorbing all the light. स्पोर्टी बहुत लगता है, बट साथ ही साथ आ जाते हैं the elephant in the room, this big screen over here. Now, this is the first time we are seeing such a big screen on a Volkswagen car, and a lot of the features are actually controlled through this screen. You have to go deep into the menus. Everything's been put together really nicely. The response is great, but you do have to use the screen to enable a lot of features, including your climate control system. अब एक और बड़ा फीचर जो इस फ्रंट रो में जिसके बारे में मुझे बात करनी होगी are the seats. सीट्स का मटेरियल काफी प्रीमियम फील होता है. साइज की बात करूं, मेरे साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे से जो थोड़े बड़े लोग होंगे उनको शायद से ये सीट्स छोटी फील हो सकती हैं. सो नाउ वी आर इन द सेकंड रो ऑफ द Volkswagen Tayron, एंड जो ब्लैक्ड आउट कैबिन की मैंने बात करी थी ना, वो यहाँ पे इशू थोड़ा और प्रोमिनेंटली फेस होता है. अभी तो मैंने यहाँ का सनशेड खुला रखा हुआ है एंड जो पैनोरामिक सनरूफ है इसका भी शेड हटा रखा है. सो थिंग्स फील नाइस, इट्स नाइस एंड सनी आउटसाइड, सो इतना इशू नहीं है. बट रात में अगर ये रूफ लाइनर बंद है,
थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगा एक क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला हल्का बहुत फीलिंग आ जाता है, बट दैट असाइड आई थिंक it's a very well equipped area. First of all, sun blind. I think the most important features in Indian cars today because of the hot conditions that we face in our country. So that is there. It's a manual one, but nonetheless, you've also got 2 charging ports over here, air vents, and the climate control system on this car is a 3-zone system. Seats की बात करूं, comfort wise similar है आगे जैसी. यहाँ पे काफी flat bench देखने को मिलता है, इसलिए 3 लोग बैठेंगे तो आराम से. लेकिन बीच में एक ये बड़ा सा ट्रांसमिशन टनल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी 4 मोशन टेक है, इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव कार. सो उसकी वजह से बीच में ना जो बैठेगा उसको लेग स्पेस की दिक्कत थोड़ी बहुत यहाँ पे जरूर होने वाली है. सो यू कैन सी स्पेस के मामले में यहाँ पे कमी नहीं है. अंडर थाई सपोर्ट कहूँगा अच्छा खासा है. नी रूम भी मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा मिल रहा है इस पोजीशन पे. हेडरूम की भी डिस्पाइट अ पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं फेस हो रहा है. अब चलते हैं 3rd रो में, देखते हैं सिचुएशन वहां कैसी है. नाउ अब आपने मुझे आगे देखा था जिस पोजीशन पे सीट थी, अब मैंने इसको थोड़ा सा और आगे किया है. अपनी जो नॉर्मल पोजीशन थी आगे वाली उसमें तो मैं यहाँ फिट ही नहीं हो पाता. इसमें आई हैव जस्ट अबाउट फिट ओवर हियर विद माय नीज इन अ रियली अप पोजीशन. Plus they are grazing the seat, they are resting on the seat in front of me. So ये एक comfortable situation तो किसी भी एंगल से नहीं है. छोटी मोटी जर्नीज के लिए, शॉर्ट सिटी जर्नीज के लिए एक अडल्ट यहाँ पे बैठ सकता है, बट मोस्टली आई थिंक द 3rd रो ऑफ द Volkswagen Tayron is best suited for smaller kids. Now we're in the driver's seat, and by the smile on my face, I'm sure you can imagine that this is where I'm the happiest sitting in the Volkswagen Tayron. बात करते हैं यहाँ पे engine के साथ. Obviously that's the party piece over here. It's a 2-liter TSI engine. That means it's a turbocharged petrol engine. Makes about 204 PS, 320 Newton meters of torque, and all that output is channeled via a 7-speed DSG gearbox. And साथ ही साथ इस गाड़ी में Volkswagen की 4 motion टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, which is VW speak for all-wheel drive. So I think the engine, what I really love about this is that despite being a turbocharged petrol engine, it loves to rev till about 6,000 RPM. Just underneath that is where the red line is. Now I think start करें कि what I really love about this engine is the way that this engine just loves to sing. You can rev it out, it will rev out very easily, feels smooth, feels refined. And I love that exhaust and intake noise that comes inside the cabin. There are not many 4-cylinder engines that sound so good, but this one sounds really good in my book. DSG की बात करें, as usual, it's smooth when you want it to, but if you're in a hurry, if you want it to shift quickly, it will do that as well. यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, ऑफ रोड, स्नो. अब ऑफ रोड और स्नो तो हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करे, बट इको, कंफर्ट और स्पोर्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इको कंफर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता है. कार इज़ प्रिटी वेल मैनेजेबल. दोनों मोड्स में आप ठीक ठाक तरीके से चला सकते हैं, कोई रिडक्शन इन पावर फील नहीं होता. स्पोर्ट मोड में व्हाट यू फील इज़ दैट द throttle response, now that sharpens up and it becomes a much livelier affair driving the Volkswagen Tayron. So time to sum up my opinions about the Volkswagen Tayron R-Line, and I'll be really simple and quick over here. गाड़ी practical है, versatile है, like any good SUV should be. And it also drives really well. The tech on board feels really nice, really well put together. But lastly, इसका price, वो मुझे अभी नहीं पता है. Now we are expecting Volkswagen to price this somewhere between 45 and 50 lakh rupees, and उस price bracket में जितना नीचे की तरफ आएगी उतना इसका value proposition और अच्छा होने वाला है. I mean, if they price it around 45 lakh rupees, I don't think Volkswagen is gonna have any problem selling the numbers they want to justify having this car on their showroom floors. Now let's head on over to the world of two-wheelers, जहाँ पर TVS लेकर आया है Ntorq 150. We've already brought you our first ride impressions of the scooter from their test track on the Times Drive show. But test track पर हमें उतनी ही कहानी समझ आती है जितना test track allow करता है. Finally, we've spent more time with the scooter, and now it's time to take a deeper look into the Ntorq 150 package with Ankur Taneja up next.
Now there are very few scooters in and around 150cc category, but हाल ही में TVS अपना नया 150cc Ntorq लेकर आया था। आसपास देखें तो Zoom 160 भी हाल ही में लॉन्च हुआ था। There is Aerox 150, तो ये सब कुछ ऑप्शंस हैं। There is Aprilia 160 also, but TVS specifically थोड़ा स्पोर्टी और फैमिली सेंट्रिक डिजाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूटर को इंडियन मार्केट में लेके आया था। So in this video I'll discuss the strengths and weaknesses of this TVS Ntorq, pros and cons of this Ntorq 150, and is this the best 150cc scooter available in India? So I'll keep on sharing back to back, one-on-one, what are the things that I liked and what are the things that I didn't like about this Ntorq 150 after experiencing it for the last couple of weeks. So let's start with the element that I liked about the scooter, and the first element that is impressive about this Ntorq 150 is its design. Sharp, aggressive, sporty, stylish. Whether you see it from front, side or rear section, the scooter looks really good. Then first element which I did not like is the front tire size. Although राइड को लेकर वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन साइड से अगर आप स्कूटर को देखते हैं तो प्रोपोर्शन वाइज रियर फ्रंट को अगर आप देखते हैं इकट्ठे तो आपको थोड़ा सा वो अनइवन फील होता है इस टायर के प्रोफाइल या साइज को देखकर। The next element which I liked about the scooter are the features that are there in this Ntorq 150. You get the TFT color display in the top variant. So there are two variants. It starts from 1,09,000 ex-showroom and goes up to around 1,19,000 ex-showroom for the TFT instrument cluster variant, where you get more and extra features. Next element जो मुझे सही नहीं लगा है इस Ntorq के बारे में, that is the space, the boot space that is there, which is around 22 liters only. So यहाँ पर मामला जो है थोड़ा कमतर हो जाता है। आपका फुल फेस हेलमेट भी यहाँ पर इजीली नहीं आएगा। इजीली क्या आएगा ही नहीं, हाफ फेस हेलमेट आप रख सकते हैं, पर इसके अलावा देयर इज USB चार्जिंग पॉइंट which I believe could have been there in the front, but यहाँ पर कुछ इस तरह से ये इसमें दिया गया है। So स्पेस भी काफ़ी आपको कम यहाँ मिल रहा है, 22 लीटर, not good enough. Next element which I again felt could have been better is the balance that is there or the absorption that is there in the rear suspension, especially when you are riding this on bad patches, which I did. So वहाँ पर आपको वो comfort जो है या stiffness जो है especially थोड़ी ज़्यादा आपको मिलेगी। comfortable आपको उतना feel नहीं होगा अगर आप खराब रास्तों पर स्कूटर को चला रहे हैं, तो वो एक aspect आपको ध्यान में रखना पड़ेगा in case आप ये स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो। Last and final element जो मुझे अच्छा लगा है स्कूटर के बारे में, that is the pricing. 1,09,000 एक्स शोरूम से प्राइस स्टार्ट हो रहा है, 1,18,400 के आसपास एक शोरूम प्राइस जाता है। तो वहाँ पर प्राइसिंग जो है मुझे लगता है TVS ने काफ़ी कंपेटिटिव रखी है सेगमेंट में। हालांकि एग्जैक्ट 150cc में कोई स्कूटर आसपास नहीं है, लेकिन एरोक्स की बात करें, Zoom 160 की बात करें या फिर और जो स्कूटर हैं, तो कंपेटिटिव प्राइसिंग उस हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। वहाँ पर आपको ऑफकोर्स थोड़ी एक्स्ट्रा पावर वगैरह मिल रही है, बट परफॉर्मेंस के मामले में ये भी आपको निराश नहीं करेगा। सो दैट प्राइसिंग फैक्टर ऑल्सो वर्क्स इन फेवर ऑफ दिस TVS Ntorq 150. And with that, it's time for a small break on the Times Drive show. But bane rahiye hamare saath, because once we're back, we'll get into a special conversation with Škoda Auto India. See you on the other side. वेलकम बैक, मैं हूं मानव सिन्हा, आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो और आज हमारे साथ है द टाटा Altroz. Now it's time to talk about the Škoda Kushaq. We've already shown you what's new on the car, but a lot of you on our social media handles pointed out that the Kushaq does not come with ADAS. Now this is a conversation that has to be had straight with the manufacturer. तो चलते हैं अंकुर तनेजा के साथ, who is doing just that, up next. Hello my
my dear viewers, welcome back to Times Drive. And today we have a very special guest with us, Mr. Ashish Gupta, who is the brand director at Skoda India. Thank you, Ashish, so much. Thank you for having me. Times Drive. So, again, as I was saying, exciting day, an exciting year ahead. Lots of, especially the new Kushaq. And apart from that, you've also introduced more variants in the existing products that are there in the Skoda lineup. Yeah. So, starting with the Kushaq first. Lot of new changes and couple of new segment first features that you guys have introduced in the new Kushaq. So if you can elaborate that, what all has changed in the new Kushaq and what was the strategy behind that? No, I Talk think, about that. first of all, talking about what has changed, I think a lot has changed. There's a long list of features which I will not be able to cover today. But some of the salient points that we have tried to address, first of all, I think with the new Kushaq, we get a segment first 8-speed automatic, mated to the 1-liter TSI engine. We also, get a panoramic sunroof into the car. We get 4 disc brakes into the car with the 1.5 segment first rear seat massager. We get a larger, digital cockpit. A lot of other host of features that we have built into the car. But the entire strategy also has been about democratizing technology. India loves sunroofs. So again, with the new Kushaq, we actually are bringing electric sunroofs right from the base. Yeah. Along with that, a lot of features like auto-dimming IRVMs, defoggers, rear wipers, all are being built right from the base variants so that we can broad base our offering to the customers. And also apart from the new Kushaq, you guys have introduced like other variants in the existing products, like this Monte Carlo edition. We have the Monte Carlo, which is also being launched right at the start of the new Kushaq. Typically, the Monte Carlo comes 1 year after the introduction of a new model, but we are bringing it along. On the Kayak, we are introducing 2 new trims from today. The Classic Plus. It has been a very successful product for you. Yes. And the Classic Plus, sits above the Classic, the base Classic variant. Will be offered with a manual and a 6-speed automatic. Again, I think the most accessible real automatic in that segment. We are also standardizing a lot of features from the Classic Plus upwards. We are also bringing in a lot of standard features on the Signature and the Signature Plus. We are also bifurcating the top trim, the Prestige into Prestige and Prestige Plus. So basically, from we are increasing our lineup on the Kayak from 4 variants and 7 price points to 6 variants and 11 price points. And later in the year, we also come with the Kayak Sports line. And Ashish, in terms of growth strategy for this year, customer feedback you guys have had. So वहाँ पे किस तरह का feedback आपके पास और नया inputs आपके पास आए हैं? Maybe you already have incorporated some of them in the current products or the products that you announced today. So उसको लेकर अभी आपको लगता है where are the areas या कहाँ भी gap है जो आप इस साल fill करने की कोशिश करने वाले हैं? देखिए, I think जो भी हमने product actions आज लिए हैं और जो announce किए हैं, this is based on interactions with customers. Customers have told us कि हमें we need access to more features. That is what we have tried to bring. जो features customers ने पिछले 3-4 साल में हमसे कहे हैं कि कुशाक में होने चाहिए, हमने try किया है कि as many of those features as we can, we have brought in. But at the same time, we have also taken the expectation by customers from the Skoda brand even higher. Yeah? For example, nobody expected an 8-speed automatic from us. We've introduced that. Nobody expected a rear seat massager from our cars. We've introduced that. So we also believe in somehow leading the customer setting the bar for customers and increase their expectations, because at the end of the day it's an aspirational brand, and we need to maintain that aspiration of customers from our brand. And with that, we've come to the end of this edition of the Times Drive Show. उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा. अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो Times Drive के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें रीच आउट जरूर करें. And if you're planning to buy a new car, a new scooter, a new motorcycle, then make sure you visit timesdrive.in, because that is where you'll find all the necessary information to make an informed purchase. That's about all for today. I'm Manav Sinha signing off. I'll catch you same time next week only on the Times Drive Show. अब स्मार्टफोन्स के बिना